You are able to see the file? Yes, sir. Okay. Uh, Fine. We will start. There is one query in the chat box that can you explain injective and surjective function? Okay. So I will just revise what we have done yesterday for one-to-one and onto function. One-to-one means it is injective and onto means it is surjective. If it is one-to-one as well as onto, then we say the function is bijective. So what I will do is I will just revise the definition of a function what we have discussed. Uh, I'll just scroll up just a second. Huh? Okay. See, this is what is the function definition, and this is the diagrammatical representation. So, what does the diagrammatical representation tells us that every element in the domain, if we have a function, if we have a function f from x to y, then x is said to be the domain of the function, y is said to be the codomain of the function. So basically, when we say f is a function, what it means that every element in the domain will have a unique image in the codomain, right? Every element in the domain will have a unique image in the codomain. That is what it says. Then we had also discussed that for f to be a function, what is an important thing? The important thing is one element in the domain cannot go to two different elements in the codomain. Okay, again I repeat, one element in the domain cannot go to two different elements in the codomain. That means a single element in the domain cannot have two different images in the codomain. But uska ulta true hai. That means one element in the codomain can have two different pre-images. Okay, one element in the codomain can have two different pre-images. That is valid. That is what we have seen yesterday. One of the simplest and the easiest example for this was your function x square. Okay, function x square, f of x equals to x square. That is the simplest example which tells us okay, one element in the codomain has two different pre-images. Like we had seen f of 1 का इमेज भी वन है, f of -1 का इमेज भी वन है. तो दिस इज एन एग्जांपल जहां पे वन का दो प्री इमेज आता है, वन एंड -1. So this is what is there with respect to a function. Now when we talk about one-to-one function, that is injective function and bijective surjective function. So before that I would like to revise what we have discussed about the range of the function. See, if f is a function from x to y, then range of the function is the set of all y's belonging to the codomain such that y is equals to f of x for some x belonging to the domain. This is the technical definition of your range. Understanding purpose के लिए what you can say, range of the function will contain those elements of the codomain. Okay, again I repeat, range of the function will contain those elements of the codomain which has a pre-image in the domain. ठीक है, जो एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट होता है डोमेन में, वो सब एलिमेंट्स तुम्हारा रेंज में होगा. सर वो स्क्वायर का मतलब कोडोमेन है क्या? स्क्वायर, ये स्लैश के बाद जो स्क्वायर दिख रहा है वो पूछ रहे हो ना? यस सर. नहीं नहीं, वो उसका एक ये है, जब वो फंक्शंस मैथमेटिकल फॉर्मेट में टाइप कर रहा था तो वो आई वाज नॉट एबल टू पुट अ स्लैश ओनली, तो मेरे को डिवीजन ऑपरेटर के जैसा करके वो दिखाना था. डोंट जो ब्लैंक स्क्वायर है उसको इग्नोर करो, वो कुछ भी नहीं है. ओके सर. Okay, so again I repeat, range of the function will contain those elements of the codomain which has a pre-image in the domain. We had seen के जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट होगा. राइट, वी हैड सीन मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे
there are some extra elements in the codomain जिसका pre-image नहीं है करके, so that is very well possible. Now comes the one-to-one function. One-to-one function means two different elements of the domain will go to two different elements in the codomain. Okay, two different elements of the domain will go to two different elements of the codomain. That means वो जो हम लोग ने f of x equals to x square का एग्जांपल जो कंसीडर किया था, जहाँ पे 1 और -1 का इमेज 1 है, तो वो केस यहाँ पे नहीं होगा. ओके, क्योंकि 1 एंड -1 आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, तो 1 to 1 के लिए वो दोनों का इमेजेस भी डिफरेंट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इट सेज. ओके, 1 to 1 में what it says, two different elements of the domain will have two different images in the codomain. मतलब दो different elements किसी एक element को नहीं जाएगा. ठीक है, two different elements in the domain will not go to the same element in the codomain. That is what is your 1 to 1. 1 to 1, 1 to 1, as it says, one element in the domain will go to one element in the codomain. Onto function f from x to y is said to be onto if range of the function is same as the codomain. Okay, if range of the function is same as the codomain, that means every element in the codomain has a pre-image. That is what it says. Every element in the codomain has a pre-image in the domain. If that is true, function is said to be onto. तो जो हम लोग ने वो डायग्राम में देखा था, एक मिनट, just scroll up and go to the diagram. Yes, this diagram. Here you can see कि y4 और y5 का pre-image नहीं है. Right? In this diagram we can see y4 and y5 का pre-image नहीं है. So this function is not onto because every element in the codomain does not have a pre-image. So onto means every element in the codomain has to have a pre-image in the domain. That is nothing but we say range of the function is same as the codomain. अरे दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव. ओके, दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मींस 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू. तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो यू कैन फाइंड इट्स इनवर्स, और यू कैन से द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट if the function is bijective. That is the basic requirement for existence of the inverse. Okay. Okay. So this is what we have discussed. I hope the doubt is clear now. The person who has doubt, Yes, sir. Clear? Okay. Now tell me, before we go to the definition of not the definition, sorry, example. Tell me, what can you tell about the function x cube? If I have a function f which is defined as x cube on the real domain, will that function be 1 to 1? F is a function from real numbers to real numbers defined as f of x equals to x cube. Will it be 1 to 1? X cube, is it 1 to 1?
Yes, is the function x cube 1 to 1? Check out. Okay, it is 1 to 1. Fine. X cube is 1 to 1. 1 to 1. Because when you take f of x equal to f of y, that is x cube equal to y cube, then you will come to a conclusion that x is equal to y. Okay, so it is a 1 to 1 function. Okay, we go to the next example, which is the first example for the day. Fine, we have a function f which is defined from the set of natural numbers to itself. And how it is defined? F of x is defined as 4x if x is odd, and it is x when x is even. Again, I repeat, we have a function from the set of natural numbers to itself, which is defined as f of x equals to 4x when x is odd, and it is equals to x when x is even. You have to check whether the function is 1 to 1 and onto. Okay, you have to check whether the function is 1 to 1 and onto. So tell me the answer. Is it 1 to 1? First tell me for 1 to 1. Is it 1 to 1? And again I repeat what I have told. If you say yes, you should be able to prove the things in general. Okay, if you say yes, then you should be able to prove it in general. And if you say no, then you can give an example जिसके लिए वो satisfy नहीं होता है. ठीक है, if you say no तो एक example दे दो, but if you say yes, so you should be able to prove it in general. So tell me the way in which the function is defined. Is it 1 to 1? F of x is 4x when x is odd, and it is x when x is even. Try to find out whether the function is 1 to 1. If you are able to give the answer of this question correctly, then I according to me तुम लोग का ये 1 to 1 and on to का concept clear हो गया जाएगा करके. So f of x is 4x when x is odd, and it is x when x is even. We have to check whether it is 1 to 1. We have to also check whether it is onto. तो 1 to 1 है, onto है, वो check करना है. So you have to give the answer. I am waiting for your answer. Tell me. First sum for the day, f of x is 4x when x is even, f of x is x when x is odd. Is this function 1 to 1? Is this function onto? That is what we are supposed to find out. And you are supposed to give the answer.
I am waiting for your answer. Unless and until you will try to solve the sum, the things would be vague only. Like you will say समझा समझा. I will also assume जो तुम लोग बोल रहे हो वो correct है करके. But unless and until you do it on your own, so otherwise the things are like smooth. But जब तक तुम लोग नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कितना potholes है रोड में. Tell me, I am waiting for your answer. दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर yes और no. Yes है तो जस्टिफाई करो, नो है तो जस्टिफाई करो. व्हाट इज द बिग डील? नो बिग डील इन दिस. Yes, there are so many students in the class today. What has happened? कितना है? 40 तो था पहले, 70 है. So out of 70, no one. And yesterday also there were 80 odd students. Okay, yesterday also there were 80 students. So I assume that those who were there yesterday, they are there today also. So tell me, I'm waiting for your answer. Sir, it's onto function, I think. It's on to. First tell me about 1 to 1. अच्छा ठीक है चलो on to. Why you think it is on to? Tell me. Sir, it cannot be one to one. That's why it's onto. It is not 1 to 1. That is why it is on to. That is what you want to say. Yes, sir. There is no relation between the two properties कि अगर एक फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो वो on to होगा करके, या वो 1 to 1 है तो on to नहीं हो सकता. ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है दोनों में. So that justification is not acceptable. Think. एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा कि पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा सेटिस्फाई होगा. ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. Yes. Okay. Anyone else wants to try? If you don't want to try, I will give it to you as your homework, और वो तुम लोग आंसर करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही सब एग्जाम में डाल दूंगा करके. तो Yes, tell me. सर 1 to 1 हो सकता है ना, बिकॉज 1 to 1 में
सिर्फ अलग अलग एलिमेंट चाहिए ना, इसका प्री इमेज अलग नहीं हाँ, हो तो सकता। दो अलग एलिमेंट तो डोमेन अगर का। x के कंटिन्यू। प्लेस में 3 रखा तो 4 3 हाँ, 12, तो इट इज इवन। वैसे कुछ और नंबर अगर रखा सपोज 1, तो अलग आएगा ना, इवन आंसर आएगा, बट सबका अलग अलग रहेगा ना इसमें भी। अच्छा, so you want to say it is 1 to 1. यस सर। Okay. Anyone else? Yes, anyone else? As I told you कि if you will not give the answer, ये तो अभी एक ही जन ने खाली हेमाक्षी ने आंसर दिया, वो करेक्ट है कि रॉन्ग है वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट इफ यू डोंट आंसर आई विल गिव दिस एज होमवर्क, और ये फिर तुम लोग जब तक मेरे को बोलेगा नहीं कि सर ये हो गया, तब तक मैं वो सम को वापस टच नहीं करेगा करके। देन डोंट टेल मी कि अगर वैसा सम एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये मेरा बहुत बुरा आदत है। फिर पर्पसली ऐसे ही सम डालूंगा एग्जाम में जो मैंने होमवर्क में दिए हुए और जिसका आंसर तुम लोग ने मेरे को दिया नहीं करके। So anyone who agrees with what Himakshi said कि वो 1 to 1 है, और if you disagree then tell कि तुम लोग डिसएग्री करते हैं हिमाक्षी के आंसर से। Yes, Ifat, are you there? Ifat, Kajol, you were there yesterday? Yes, sir. So try. What do you think 1 to 1 है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऑड और इवन का अलग अलग केसेस कंसीडर करना है या फिर दोनों को एक साथ? एक ही साथ दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही साथ। जब भी तुम लोग 1 to 1 या ऑन टू कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करते हो तो यू हैव टू कंसीडर द फंक्शन एज वन सिंगल फंक्शन। उसका दो पार्ट्स होगा, दैट इज ओके, बट वो एक ही कंसीडर करना है। Or if you want some more time to think on that, okay, you can take the time till tomorrow, not a problem. I don't have any objection. लेकिन टाइम दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम लोग गूगल बाबा में जाके सर्च करके आंसर रट्टा मार के मेरे को बोल दोगे करके। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ आल्सो। Okay, chalo. So since Himakshi has given tried to give the answer for the 1 to 1 ka part, we will discuss that. Himakshi, can you unmute yourself? And can you just tell again why you think it is 1 to 1? Yes sir. Yeah, can you tell why you So think it for is 1 to 1, like for any element we need different pre-images, like it can't be same. So if we take like it is function of x is equal to 4x. So if we take x any odd number, like we take 3, so 4 3s are 12, so it is an even number. Now if we take another like any
number, like if I take 5, so 5 for 4 is 20. So again it is even, but the answers are different. When you like, take three x is 5, oh, तो okay 20 आएगा. Fine. Okay, fine. Continue. So like that only, if you take any odd number and the answer, that even answer is coming different for every number. Like the p images are different, no? So it can be Okay. 1 to 1. That is why you think it is 1 to 1. Okay, now tell me, function का domain क्या है? Himakshi, I'm asking you only. Function का domain क्या है? Yes, sir. Domain. Function का domain क्या है? Yesterday we had seen that when f is a function from a to b, a is said to be the domain of the function, b is said to be the codomain of the function. तो यहाँ पे domain क्या है function का? Anyone else? Function का domain क्या है? Natural numbers. Okay. Function का codomain क्या है? वो भी natural numbers है? Natural. Right. So f is a function from the set of natural numbers to itself. N to n मतलब domain भी natural number है, codomain भी natural number है. Agreed? Okay. Himashi, now you tell me. You said f of 3 natural number है. Yes, sir. Okay. 3 is natural number. What you said for f of 3? F of 3 कितना होगा? Well, no. Okay, so I write f of 3 as 12. 3 is natural number, तो मेरा domain में belong करता है, and I get f of 3 as 12. Okay. Now tell me, 12 is 12 a natural number? Yes. 12 is also a natural number, right? And what is f of 12? f of 12 क्या होगा? 48. 48. How come? I think I heard some other answer. What was the answer? 12. Can you repeat? Sorry? 12 itself. 12. Okay. F of 12 is 12. See, function का पढ़ो, definition पढ़ो अच्छे से. Function कैसा define किया हुआ है ये केस में? F of x is 4 times x when x is odd, and it is x when x is even. So when you're taking f of 3 odd है, तो मेरे को 4 into 3 12 मिला. And when you take f of 12 तो even है, तो f of x is x when x is even, so f of 12 is 12. So what we get here, कि 3 and 12 are two different numbers, right? 3 and 12 are two different numbers, but f of 3 is same as f of 12. So two different numbers in the domain does not have two different images in the codomain, right? Two different elements in the domain does not have two different images in the codomain. So यहाँ पे f is not 1 to 1. Okay, f is not 1 to 1. Why it is not 1 to 1? क्योंकि 3 and 12 are different natural numbers, and 3 and 12 का images same है. So two different elements in the domain are going to same element in the codomain. That is the reason that the function is not 1 to 1. Okay, function is not 1 to 1.
Is this clear? Like that you can check for x equal to 7 also. अगर f of 7 लिया तो 28 मिलेगा and f of 28 भी 28 मिलेगा. Okay, f of 7 28 मिलेगा and f of 28 भी 28 मिलेगा. So 7 and 28 are different, but their images are same. So function is not 1 to 1. And again I repeat, this is what is expected. Okay, if you are telling it is not 1 to 1, so you give one example जिसके लिए वो 1 to 1 का प्रॉपर्टी फेल हो रहा है. तो हम लोग के पास मिल गया 3 and 12, right? Is this clear? 1 to 1 क्यों नहीं है? See, again I repeat, अज्यूम करो कि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट का एग्जाम है जहां पे तुमको जस्टिफाई नहीं करना है कि तुमने जो आंसर सिलेक्ट किया वो क्यों कैसा आया करके. वो बोलते हैं ना हम लोग एक अपना नॉर्मल फ्रेंडली लैंग्वेज में कि तुक्का लगाया करके. तुक्का लगा के भी करेक्ट आंसर आ जाता है. नथिंग रॉन्ग इन इट. तुम्हारा परसेंटेज वाइज पासिंग वाइज तुमको तुक्का लगा के आंसर मिल गया तो इट्स ओके. बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा वो तुक्का काम नहीं आएगा करके. तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई. मींस अगर कोई पूछा तो कि ये आंसर जो तुमने सिलेक्ट किया व्हाई डू यू थिंक इट इज करेक्ट और व्हाई डू यू थिंक इट इज नॉट करेक्ट, राइट? सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि मैंने 1 to 1 नहीं है बोला तो उसका रीजन क्या है. अगर मैंने 1 to 1 है बोला तो उसका रीजन क्या है करके. करेक्ट? Again I repeat, no one will ask you from your exam point of view. अगर multiple choice है तो कोई नहीं पूछेगा कि like if this is the question, उसमें options दिया है 1 to 1, on to, not 1 to 1, not on to. ऐसा assume करो ये 4 option है and you select not 1 to 1. तो fine, no one will ask you क्यों नहीं है करके. But for an individual you should be able to आंसर. वो आंसर रेडी होना चाहिए तुम्हारे पास. अगर कल कोई मेरे को पूछ ले कि 1 to 1 क्यों नहीं है तो आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट. फाइन? ओके, नाउ थिंक वो ऑन टू है कि नहीं है. आई थिंक नाउ इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर. ऑन टू है कि नहीं है? No, sir. सॉरी, No, sir. कैन यू जस्टिफाई? Sir, y will be equal to 4x for odd. Then x will be equal to y by 4. And if we consider 1 as odd number, we will get y as 1 by 4, which cannot be the part of codomain. Okay, very good. Very good. So what Ifat said, if you take 1 in the codomain, 1 is a natural number, तो टेक 1 इन द कोडोमेन. तो 1 का प्री इमेज नहीं है. ओके, 1 का प्री इमेज नहीं है. एंड यू कैन सी आल्सो द वे इन विच योर फंक्शन इज डिफाइंड. अगर x ऑड है तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है? 4x. ओके, x अगर ऑड है तो फंक्शन वैल्यू देता है 4x. अगर x इवन है तो फंक्शन वैल्यू देता है x इटसेल्फ. दैट मींस राइट हैंड साइड में कभी भी तुमको दैट इज राइट हैंड साइड मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन में तुमको ऑड नंबर आएगा ही नहीं. तुम्हारा डोमेन में भले ऑड नंबर है बट रेंज में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा इन द वे इन विच द फंक्शन इज डिफाइंड. क्योंकि अगर तुम कोई भी ऑड नंबर ले लो तो तुम्हारा आंसर आता है 4 टाइम्स दैट नंबर. जैसे x को 1 ले लिया तो मेरा f of 1 कितना होएगा? 4. f of 3 हो रहा है 12. f of 5 होगा 20. f of 7 होगा 28 एंड सो ऑन, राइट? और मेरा इवन नंबर है f of 2 is 2, f of 4 is 4, f of 6 is 6. तो थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि तुम्हारा रेंज में ऑड नंबर्स आता ही नहीं है. तुम्हारा कोडोमेन में ऑड नंबर्स है, राइट? तुम्हारा कोडोमेन में ऑड नंबर्स है बट रेंज में ऑड नंबर्स नहीं है. ठीक है, रेंज में ऑड नंबर्स
नहीं है. So that is why you take any odd number. So I'll take the simplest one. 1 belongs to the set of natural numbers. That is codomain में. 1 belonging to the codomain does not have a pre-image in the domain. Therefore, F is not onto. Not only for 1, you can take for 3. 3 का भी pre-image नहीं है, 5 का भी pre-image नहीं है. In simple words, कोई भी odd number ले लो codomain में, तो उसका pre-image exist नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा range of the function में खाली even numbers और 4 का multiple ही है करके. तो 4 का मल्टीपल हुआ तो भी वो इवन ही होता है. तो वी कैन से कि तुम्हारा रेंज में खाली इवन नंबर्स है, तो कोई भी ऑड नंबर ले लो कोडोमेन में, उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगा. तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1. Is this clear? Why it is not 1 to 1 and why it is not on 2? Is this example clear? Yes, sir. Okay. Now we go to the fourth example. This I will do. Fifth, I think I will give for their homework. The fifth भी मेरे को करना है. 6, 7, 8. ठीक है. 4, 5, 6 we will do. 7, 8 you can do as your homework. So what does your fourth question tells us? F is a function from set of real numbers other than 4 by 5. वो जो r/4/5 लिखा हुआ है, that r/4/5 means it is the set of real numbers other than 4 by 5. वो हम लोग बोलते हैं ना माइनस, मतलब वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स में से वो 4 by 5 को निकाल दिया हमने, क्योंकि वो 4 by 5 को निकाल दिया. So domain is the set of real numbers other than 4 by 5. Codomain is the set of non-zero real numbers. ठीक है, that is real numbers other than 0. तो नोटेशन इज क्लियर. फोर्थ सम का डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन 4 by 5. कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन 0. And how the function is defined? It is 1 upon 5x minus 4. अभी you would be thinking के पूरा रियल नंबर्स में से खाली 4 by 5 को ही क्यों डिलीट किया हमने? क्यों? क्योंकि the way in which your function is defined 1 upon 5x minus 4, अगर उसमें तुम x को 4 upon 5 लोगे तो फंक्शन क्या मिलेगा? वैल्यू क्या मिलेगा? x को 4 upon 5 लिया तो x को मैं 4 upon 5 लेता हूं, मेरा फंक्शन इज डिफाइंड एज 1 upon 5x minus 4, और x को मैं 4 upon 5 लेता हूं, तो मेरे को f of 4 upon 5 कितना मिलेगा? 0. Sorry? Infinity. Infinity. It is not defined, right? वो 1 upon 0 का फॉर्म में जा रहा है, तो दैट इज द रीजन कि वो 4 upon 5 को डिलीट किया हुआ है डोमेन में से, क्योंकि 4 upon 5 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता है. ठीक है. एंड सिमिलरली कोडोमेन से 0 को डिलीट किया हुआ है, क्योंकि वो पॉइंट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा इसके लिए. दैट वी विल सी व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम कि वो 0 को क्यों डिलीट किया हुआ है. So again I repeat, we have a function f from the set of real numbers other than 4 by 5 to the set of non-zero real numbers, which is defined as f of x is 1 upon 5x minus 4. We have to prove that the function is bijective. Question में clearly लिखा हुआ है, to show that function is bijective, also find its inverse.
मतलब यहाँ पे अपने को प्रूव करना है वो बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स अपने को प्रूव करना है कि वो 1 to 1 है एंड इट इज ऑन टू। तो पहले क्या प्रूव करेंगे हम लोग? टू प्रूव f is 1 to 1, that is to prove two different elements in the domain, that is to prove for xy for xy belonging to the domain x not equal to y should imply f of x not equal to f of y, or that is what it says, two different elements in the domain should have two different images in the codomain. या तो जो हम लोग सम्स के लिए सॉल्व करते f of x equal to f of y should imply x is equal to y, ये वाला भी यूज कर सकते हैं हम लोग क्योंकि उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है एंड वी हैव प्रूव्ड इन द सेकेंड यूनिट, दैट इज लॉजिक का पार्ट में, कि p implies q is equivalent to negation q implies negation p, that is nothing but it's contrapositive, right? So f of x equal to f of y should imply x is equal to y, ये अपने को प्रूव करना है। So we will start with f of x equal to f of y. Okay, we start with f of x is equal to f of y. Now f of x is equal to f of y. तो मेरा f of x क्या है? 1 divided by 5x minus 4 is equals to 1 divided by 5y minus 4. This is what is f of x equal to f of y. इसको सॉल्व करके अपने को चेक करना है और या अपने को प्रूव करना है कि x is equal to y. So by cross multiply I can write 5y minus 4 is equals to 5x minus 4. इसको सिंप्लीफाई करके if I add 4 on both sides, I get 5x equals to 5y, और फिर 5 से डिवाइड करेगा तो I get y is equals to x, and this implies function is 1 to 1. Okay, this implies function is 1 to 1. Is this part fine? Yes, sir. So function 1 to 1 prove हो गया. What is the second step? To prove f is onto. To prove f is onto. See here now we have an infinite set as the codomain. और जो फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है तुम्हारा रेंज भी इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा. तो हियर वी कैन गो विद द टेक्निक के रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेम एज द कोडोमेन, क्योंकि वो इक्वालिटी प्रूव करने के लिए वी शुड हैव सम फाइनाइट सेट, बट यहाँ पे वो दोनों इनफाइनाइट सेट है तो वो नहीं करना है. उसके बदले क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन इज ऑन टू, दैट मीन्स every element in the codomain has a image in the domain. ये अपने को प्रूव करना है कि every element in the codomain has a pre-image in the domain. That basically means कि range of the function is same as the codomain.
तो वो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? yesterday we had discussed, we will start with y equals to f of x. So when you start with y equals to f of x, we get y equals to 1 upon 5x minus 4. तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें y is given in terms of x, right? Y is given in terms of x. So yesterday also we had seen onto के लिए क्या करना है? We have to get an expression of x in terms of y, right? We have to get an expression for x in terms of y. उसके बाद चेक करेंगे कि for every y belonging to the codomain मेरा जो वैल्यू है वो डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है. So I have y is equals to 1 upon 5x minus 4. So 5x minus 4 can be written as 1 upon y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अभी बेसिक एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज यूज करके we will express x in terms of y, right? तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? 5x is equals to 1 upon y divided by 4. Okay, I am using the basic arithmetic properties. तो इससे मेरे को x क्या मिलेगा? Can you tell the expression for x? x is 1 upon y plus 4. So what is my x? Can you simplify and get the expression for x in terms of y? Yes. Can you tell what is the expression for x in terms of y? This much you can answer. Basic arithmetic properties है. 4y plus 1 upon y. 4y. Okay, 1 plus 4y divided by what you said? Y. It will be 5y क्योंकि मेरे को x का वैल्यू चाहिए ना. तो तुमने Yes, बोला sir. 5x का वैल्यू है. So it is 1 plus 4y upon 5y. This is what is the expression for my x in terms of y. Now see, ये जो expression आ रहा है उसमें तुम्हारा y डिनोमिनेटर में है and y is an element of the codomain. तो अगर तुम्हारा कोडोमेन में 0 होगा तो ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं होगा एंड दैट इज द रीजन कि क्वेश्चन में ही वो 0 को डिलीट किया हुआ है कोडोमेन से. ओके, क्वेश्चन में ही 0 को डिलीट किया हुआ है कोडोमेन से. दैट इज व्हाई वी हैव द कोडोमेन एज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स. So my x is 1 plus 4y upon 5y. Now we have to check for every element, for every y in the codomain, does my x belongs to the domain? Okay, for every y in the codomain, does my x belongs to the domain? तो रियल नंबर है y, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो 1 plus 4y भी रियल नंबर होगा डिवाइडेड बाय 5y भी रियल नंबर होगा. तो रियल नंबर तो है बट मेरा डोमेन क्या है?
मेरा डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन 4/5. ओके, मेरा डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन 4/5. तो 1 + 4y/5y रियल नंबर तो मिल रहा है. ओके, 1 + 4y/5y रियल नंबर तो मिल रहा है. खाली अभी अपने को एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना है कि वो जो वैल्यू है वो कभी भी 4/5 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 4/5 हुआ तो वो मेरा डोमेन में नहीं है. ओके, इसके लिए तो व्हाट वी हैव टू डू इज, वो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का टेक्निक अप्लाई करेगा. तो कॉन्ट्राडिक्शन का टेक्निक अप्लाई करेंगे कि व्हाट वी डू, वी टेक 4/5 is equals to 1 + 4y divided by 5y. ठीक है, 1 + 4y divided by 5y equals to 4/5. अभी इसको सॉल्व करके अपने को देखना है कि ये अपना assumption है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 4/5 हुआ, बट वी वांट कि वो 4/5 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसका उल्टा अज्यूम कर रहे हैं ना. तो वी शुड गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन. So this will give us what? 4y equals to 1 + 4y. Okay, I can cancel that 5 in the denominator, और जो एक y बचता है राइट साइड पे डिनोमिनेटर में, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को ये मिलेगा 4y equals to 1 + 4y. This much is clear? Is it clear till this? And this implies 1 is equals to 0. Which is not possible. Okay, which is not possible. That means for any value in the codomain जो मेरा x मिल रहा है वो कभी भी 4/5 नहीं होगा, because that is what is the problematic point जिसको हमने डोमेन में से डिलीट किया हुआ है. तो कभी भी 4/5 नहीं होगा. So this implies the function f of x is onto. ठीक है, फंक्शन f of x is onto. तो मेरे को 1-to-1 मिला, मेरे को onto मिला. I can say f is bijective. f bijective है, therefore f inverse exists and f inverse of y is given by 1 + 4y divided by 5y. Okay, f inverse exists and f inverse of y is given by 1 + 4y upon 5y. Clear? सर वो 4y इज इक्वल्स टू 1 + 4y कैसे आया, वो फिर से एक्सप्लेन करो ना. We have considered 4/5 equals to 1 + 4y upon 5y, right? अपने को बेसिकली वहां पे प्रूव करना है कि जो मेरे को x का एक्सप्रेशन मिला इट शुड नॉट बी 4/5. हम लोग वो कॉन्ट्रडिक्शन का टेक्निक यूज करके हम लोग उसका उल्टा अस्यूम कर रहे हैं कि 4/5 is same as 1 + 4y divided by 5y. तो दोनों डिनोमिनेटर में 5 कैंसिल हो जाएगा. You can cancel out that 5. यस सर. तो हाँ 5 सर. कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा फिर? हाँ सर, 4y इज इक्वल्स टू 1 + राइट, फिर वो 4y कैंसिल हो गया तो we get 1 equals to 0.
and that is not possible. Okay. Yes, sir. Fine. So is this some clear? Okay. So we'll go to the next one. That is sum number 5. Again, sum number 5 says I have a function f which is defined from the open interval 0, 1 to the set of non-negative real numbers. Okay, I have a function f which is defined from the set of which is defined from the open interval 0, 1 to the set of non-negative real numbers. How the function is defined? X upon 1 minus x. We have to prove that the function is bijective. That means अपने को 1 to 1 and on to prove करना है, and we have to also find its inverse. तो पहले हम लोग को प्रूव करना है कि फंक्शन इज 1 to 1. To prove f is 1 to 1. Now tell me यहाँ पे मेरा डोमेन क्या है फंक्शन का? फंक्शन का डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन क्या है? Positive rational number. ओपन इंटरवल 0, 1 एंड कोडोमेन codomain is r plus. R plus means non-negative real numbers. Okay. Now domain is open interval 0, 1. Tell me, does 0 belongs to the domain? Does 0 belongs to the domain? No, sir. Okay, it does not belongs to. Does 1 belongs to the domain? No. Yes. Yes. 1 कैसा ओपन इंटरवल है तो उसका एंड पॉइंट कैसा बिलोंग करेगा उसमें? नहीं करेगा ना. क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है एंड पॉइंट्स. तो यहाँ पे 0 भी बिलोंग नहीं करेगा डोमेन में, 1 भी बिलोंग नहीं करेगा डोमेन में. ओके, याद रखो ये. आई थिंक ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल भूल गया लगता है तुम लोग. रिवाइज करो. अभी 20 तारीख को एग्जाम आ रहा है तुम्हारा, उसमें जरूरत पड़ेगा तुमको क्योंकि वो यूनिट 1 में है ना. राइट. तो do remember it should not happen कि वो बेसिक थिंग्स ही भूल गया और एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ गया फिर बोलोगे सर मेरे मार्क्स कम हो गए करके. ठीक है. सो यहाँ पे वी स्टार्ट विथ f of x equals to f of y. Okay, f of x is equal to f of y. तो f of x क्या है मेरा? x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. f of y क्या है मेरा? y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y. ठीक है. x क्या है मेरा? f of x क्या है? x अपॉन 1 माइनस x. f of y क्या है? y अपॉन 1 माइनस y. अभी इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y. ओके, इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y. तो उसके लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. x into 1 minus y is same as y into 1 minus x. ठीक है. x into 1 minus y is same as y into 1 minus x. यहाँ पे मैं बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ. Now I will open the brackets. I'll get x minus xy and y minus xy.
So you can see xy gets cancelled. I get x is equal to y, and that implies function is 1 to 1. ठीक है, quite simple. Function is 1 to 1. तो ये तो हो गया 1 to 1. अभी on to के लिए क्या करना है? Every element in the codomain should have a pre-image. Every element in the codomain should have a pre-image. So to prove f is onto, that is every element in the codomain has a pre-image in the domain. Every element in the codomain has a pre-image in the domain. तो उसके लिए क्या करना है? We start with y equals to f of x. So this will give us an expression of y in terms of x. This will give an expression for y in terms of x. तो y equals to x upon 1 minus x मिला. अभी इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है? I have to express my x in terms of y. यहाँ पे y in terms of x है, उसको सिंप्लीफाई करके x in terms of y मेरे को एक्सप्रेस करना है. तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? यू कैन डू इट, क्योंकि वो प्रूव करना है ना कि वो ऑन टू है. तो एक्सप्रेशन क्या होगा x का? फाइंड आउट. वो x का एक्सप्रेशन क्या होगा y का टर्म्स में? x is equal to y minus xy. You should not have x on both sides. अभी x खाली लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए. दोनों साइड में x रहेगा तो नहीं चलेगा. दोनों साइड पे x नहीं होना चाहिए. खाली लेफ्ट हैंड साइड पे x और राइट हैंड साइड पे खाली y. खाली y मतलब टर्म्स इन्वॉल्विंग y. y upon 1 minus y. Y upon 1 minus y. I will not comment on that. I will wait for some confirmations from your friend. Yes, so the answer what Kajol has given, is it correct? Y upon 1 minus y, is it correct? Because these are small simplifications which you should be able to do it at this stage. 9, 8, 9 standard का simplification है. FY में आके तो you should be able to do it. सॉरी सर, वो नहीं आएगा. ये नहीं आएगा? ओके, तो क्या आएगा? y minus x आएगा.
I said no, राइट साइड पे x का टर्म नहीं होना चाहिए, खाली y का टर्म होना चाहिए. Yes, anyone? The expression for x in terms of y. Quite simple it is. I don't understand why this kind of calculations are also taking so much of time. Okay, I will only solve it. So first step would be मैंने उसको cross multiply किया. So I get y into 1 minus x as x. फिर मैं bracket open करूंगा. So I get y minus xy equals to x. उसके बाद में वो xy का जो टर्म है, नहीं, हाँ, मेरे को x चाहिए ना y के टर्म्स में. तो व्हाट आई विल डू, आई विल xy का टर्म में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ. So I'll get this, और यहाँ से राइट साइड पे मैं x को कॉमन लेता हूँ. I can write like this, and this gives me my x as y upon 1 plus y. ठीक है, x as y upon 1 plus y. तो ये मेरा x का एक्सप्रेशन हो गया y का टर्म्स में. अभी मेरे को चेक करना है कि मेरा y when it belongs to the कोडोमेन, मेरा जो x का एक्सप्रेशन है that is y upon 1 plus y डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है. बट मेरा डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल 0 1. ओके, मेरा डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल 0 1. तो आई विल हैव टू चेक कि मेरा x 0 1 और 1 के बीच में है कि नहीं है. So for that, y is given, y belongs to the domain. Domain is nothing but your r plus, that is the set of non-negative real numbers. That is y is greater than 0. So y is greater than 0. So 1 plus y will also be greater than 0, right? y अगर पॉजिटिव है तो 1 plus y भी पॉजिटिव होगा. So y, सर okay, वो R प्लस कोडोमेन था ना? r प्लस कोडोमेन है, हाँ. तो y तो मेरा कोडोमेन में बिलोंग करता है ना, और x मेरा डोमेन में बिलोंग करेगा. Right? Okay, sir. Okay. Yes, sir. So now what I have is y is positive, 1 plus y is positive. So therefore y 0 is less than y divided by 1 plus y, right? दोनों पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन भी पॉजिटिव ही होगा, तो वो 0 से बड़ा है. And what can you say about y upon 1 plus y? It will be smaller than what? Will it be smaller than 1? Y upon 1 plus y, will it be smaller than 1?
y upon 1 plus y will be smaller than 1 क्योंकि तुम्हारा जो न्यूमरेटर है is smaller than the denominator. न्यूमरेटर है smaller than the denominator. तो मेरा जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा. ओके, मेरा जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा. And this implies that my x, which is given as y upon 1 plus y, belongs to the open interval 0 1. That is nothing but the domain. And this implies function f is onto. फंक्शन ऑन टू मिला. पहले हम लोग ने प्रूव किया कि वो 1 to 1 है. So this gives us function is bijective. तो 1 to 1 हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया. और वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. So this implies f inverse exists. And what is your f inverse of y? f inverse of y will be जो अपने को x का एक्सप्रेशन मिला y का टर्म्स में, y upon 1 plus y, y upon 1 plus y. तो ये मेरा f inverse y हो गया. ठीक है, ये मेरा f inverse y हो गया, y upon 1 plus y. So is this clear? Yes, sir. Yes. Tell. अच्छा, वो क्लियर के लिए यस था कि कुछ डाउट है? क्लियर के लिए यस था सर. ओके ओके Sir, फाइन. can you explain the 0 less than y upon 1 plus y less than 1? y upon 1 plus y lies between 0 and 1. वो पार्ट. Yes, sir. Okay, y belongs to the codomain, and codomain is a set of positive non-negative real numbers, right? Yes. तो यहाँ पे मेरा y is greater than 0. Yes. Okay, मेरा y is greater than 0. तो 1 plus y will also be greater than 0 क्योंकि मैं उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ. Okay, तो 1 plus y is also positive. तो y and 1 plus y both are positive. So y upon 1 plus y will be positive. Okay, y is positive, 1 plus y is positive. So y upon 1 plus y will be positive. अभी वो लेस देन 1 क्यों है करके, वो लेस देन 1 इसके लिए है कि सी उसका जस्टिफिकेशन. ओके, आई विल राइट डाउन हियर. Okay, do you agree that y is smaller than 1 plus y? ये पार्ट पे अग्री करता है कि y is smaller than 1 plus y? Yes, sir. ओके, नहीं, जिसने डाउट पूछा था उसको पूछ रहा हूँ. Sir. ओके, so y is less than 1 plus y. नाउ टेल मी, अगर ये एक्सप्रेशन को और ये इनइक्वालिटी को मैं 1 plus y से डिवाइड करता हूँ, तो विल द इनइक्वालिटी बी प्रिजर्व? यस, इट विल बी प्रिजर्व क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है. तो y upon 1 plus y will be smaller than 1. Okay, y is smaller than 1 plus y. That is the reason कि y upon 1 plus y is smaller than 1. और वो दोनों पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन भी पॉजिटिव होगा करके. Okay, sir. Thank you. Okay, fine. So we go to the next sum now. Next sum, what it says, J3. J3 is basically a set
which contains the remainder, positive remainders when a number is divided by 3. Okay, J3 is the set which contains the positive remainders when the number is divided by 3. So we get 0, 1 and 2 as the possible remainders when the number is divided by 3. So in general तुम्हारा जो Jn है, माय चैनल। सो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अब लैपटॉप in general your Jn will be a set of positive remainders when a number is divided by n. तो उसका एलिमेंट्स होगा तुम्हारा 0 से n-1. ठीक है, उसका एलिमेंट्स होगा तुम्हारा 0 से n-1. दैट इज द जनरल वन आई एम टेलिंग. यहाँ पे अपने को J3 है, तो J3 contains 0, 1 and 2. F and G are functions from J3 to J3. ठीक है, F and G are functions from J3 to J3, where f of x is defined as x square plus x plus 1 mod 3 and g of x is defined as x plus 2 the whole square mod 3. Okay, what we have to check? We have to check whether f is equal to g. Okay, we have to check whether f is equal to g. Now when do we say the two functions are equal? We say two functions are equal if f of x is equal to g of x for all x. Okay, we say f is equal to g if f of x is equal to g of x for all x. तो यहाँ पे बेसिकली क्या चेक करना है अपने को कि f of x is equals to g of x. To check f of x is equals to g of x for all x in the domain, that is for all x belonging to J3. Okay, f of x is equals to g of x for all x belonging to J3. but J3 में कितना एलिमेंट है? J3 में कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, 0, 1 and 2. तो दैट मींस मेरे को क्या प्रूव करना है? f of 0 is equals to 0, f of 1 is equals to g1, f of 2 is equals to g2. That is what it means कि f of x is equals to g of x for all x belonging to J3. This much is clear कि क्या करना है? अपने को चेक करना है f is equal to g. That means we have to check whether f of x is equals to g of x for all x belonging to the domain. और डोमेन में मेरे पास 3 एलिमेंट्स है. ओके, तो मेरे को चेक करना है कि वो तीनों एलिमेंट्स पे मेरा फंक्शन का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So I have to check f of 0 is equals to g of 0, f of 1 is equal to g of 1 and f of 2 is equals to g of 2. ये मेरे को चेक करना है. तो ये चेक कैसा करेगा? अभी सिंपल थिंग, सबका वैल्यूज फाइंड करेंगे अभी हम लोग. तो पहले f of 0. ओके, सो व्हाट विल डू? f of x एंड g of x का वैल्यूज अलग अलग फाइंड करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो f of x is x square plus x plus 1 mod 3. पहला f of 0. f of 0 क्या होगा? f of 0 मीन्स x को 0 डाला तो 0 plus 0 plus 1 1 mod 3. तो f of 0 हो गया मेरा 1 mod 3 and 1 mod 3 same as 1. क्योंकि mod क्या रिमाइंडर है ना अपना. ओके, तो 1 को जब 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. f of 1, what will be my f of 1?
x को मैं 1 डालूंगा, so that is 3 mod 3 is 0. f of 2 क्या है? f of 2 क्या है? 4 plus 2 plus 1. That is how much? 6 plus 1, 7. 7 mod 3, and 7 mod 3 is what? 1. Okay. G of x is what? X plus 2 the whole square mod 3. तो g of 0 कितना होगा? Tell me. G of x is x plus 2 the whole square mod 3. तो g of 0 कितना होगा? G of 0 will be 4 mod 3. 4 mod 3 is 1, क्योंकि x को 0 डाला तो 2 का स्क्वायर मिलेगा ना, and 2 का स्क्वायर is 4. तो 4 mod 3 gives me 1. G of 1 कितना होगा? x को 1 डाला तो 3 का स्क्वायर mod 3, तो 3 का स्क्वायर is 9. 9 mod 3 is 0. Then g of 2 is g of 2 means x को 2 डाला तो 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर is 16. And what is 16 mod 3 is 1. 16 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आता है. So 16 mod 3 is 1. So we can easily check that f of x is equals to g of x for all x belonging to J3, and therefore we can say f is equal to g. Okay, this gives us that f is equal to g. Is this sum clear? Sum number 6 is clear? Yes, sir. Okay. Now there are 2 sums for your homework. You can take the screenshot of sum number 7 and 8. Then we will go to the composition of functions. Right? Done? Taken the screenshot? So Yes, in sir. both the cases, you have to prove that the function is bijective. मतलब दोनों में तुमको prove करना है कि वो 1 to 1 है और वो on to है. ठीक है?
तो प्रूव करना है, चेक नहीं करना है। कभी भी जब प्रूव करना है तो दैट सम्स आर ऑन अ लाइटर नोट इन द सेंस, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो बाइजेक्टिव है करके। अगर शो दैट की जगह पे मैं चेक लिख दूं, चेक वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो बाइजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट इफ इट इज शो दैट, तो बोल रहा है कि वो बाइजेक्टिव है करके। ओके, so next we go to the composition of function. Composition of function में what we have, f is a function from x to y, g is a function from y to z. ठीक है, f is a function from x to y, g is a function from y to z. Composition of function GOF, that is g composed with f. Okay, composition of function, that is g composed with f, is a function from x to z. Okay, it's a function from x to z, and how it is defined, g composed with f operated on x, g composed with f operated on x gives us g of f of x. Okay, that gives us g of f of x. Again I repeat, f is a function from x to y, g is a function from y to z. So the composition g composed with f is a function from x to z. Now यहाँ पे there is one important condition for the composition to exist. Okay, there is an important condition for the composition to exist, and what is that condition? G composed with f, G composed with f तभी exist होगा जब f का कोडोमेन इज सेम एज g का डोमेन। ठीक है, f का कोडोमेन इज सेम एज g का डोमेन। That is the important condition for the existence of G composed with F. Again I repeat, G composed with F will exist only if F का codomain is same as G का domain. जैसे हम लोग का मेट्राइसिस में होता है, for finding the product A into B find करना है, right? A into B कब exist होगा in terms of matrices? A into B will exist जब B का number of columns is same as A का number of columns is same as B का number of rows, right? This is the important condition for existence of A into B, where A and B are matrices. A का number of columns should be same as B का number of rows. Similar to that, G composed with F find करना है। Okay, G composed with F find करना है, तो F का कोडोमेन should be same as G का डोमेन। Okay, again I repeat, F का कोडोमेन should be same as G का डोमेन, and this is the diagrammatical representation for your G composed with F. F is a function from x to y, G is a function from y to z. So G composed with F will be a function from x to z. So this is what you can observe, कि F का codomain should be same as G का domain. And यहाँ पे we can find compositions in two orders. One is a G composed with F, जो अभी हम लोग ने देखा। दूसरा जो है that is F composed with G. F composed with G will be what? F of G of X. ठीक है, F composed with G. F composed with G will be F of G of X. तो F composed with G exist होने के लिए तुम्हारा कंडीशन क्या होगा?
F कंपोज्ड विथ G एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन इज G का कोडोमेन. ओके, G का कोडोमेन शुड बी सेम एज F का डोमेन. अगेन आई रिपीट, F कंपोज्ड विथ G कब एग्जिस्ट होगा? F कंपोज्ड विथ G कब एग्जिस्ट होगा? जब G का कोडोमेन सेम एज F का डोमेन. तो रिमेंबर कंपोजिशन दो है. One is F composed with G and another one is G composed with F. ठीक है, one is F composed with G and another one is G composed with F. तो F composed with G डिफाइन कैसा किया हुआ है? F composed with G will be F of G of X. G composed with F is defined as G of F of X. When the two compositions will exist, F composed with G, F composed with G will exist when G का कोडोमेन is same as F का domain. Okay, F composed with G will exist when G का कोडोमेन is same as F का domain. And G composed with F कब exist होगा? G composed with F will exist if F का कोडोमेन is same as G का domain. ठीक है? That is what the diagram tells us. Diagram is called G composed with F. Okay, and this note ये ऊपर होना चाहिए. एक मिनट. This is important, that composition of functions is not commutative. F composed with G is different from G composed with F. ठीक है, F composed with G is different from G composed with F. But composition of function is associative. That means you take three functions, then the associative property will hold. Okay, then the associative property will hold. That is, F composed with G composed with H will be same as F composed with G composed with H. Okay. Okay. Now we will discuss some, and provided the question of existence is there, वो कंपोजिशन एग्जिस्ट होगा तभी वो एसोसिएटिव होगा करके, और जब कंपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो रिमेंबर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सॉरी नॉट कम्यूटेटिव, but it is associative. It is not commutative, but it is associative. Okay. Now we discuss some examples. We have a function f which is defined from the set of real numbers to the set of real numbers, and it is defined as f of x is x plus 1. G is a function from real numbers to itself, which is defined as g of x is equal to x square. Now here तुम्हारा दोनों composition exist होगा, f composed with g भी exist होगा और g composed with f भी exist होगा, क्योंकि वो डोमेन को डोमेन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि दोनों का डोमेन को डोमेन सेम है. So we will find out the composition f composed with g of x and g composed with f of x. तो पहले हम लोग g composed with f के लिए सॉल्व करेगा. So what is g composed with f? G composed with f is g of
f of x. ठीक है, g composed with f is g of f of x. But what is your f of x? x plus 1, right? So वो हो जाते हैं मेरा g of x plus 1. And what is g of x plus 1? x plus 1 the whole square. क्योंकि the way in which my g of x is defined, g of x is defined as x square. So x plus 1 will be x plus 1 the whole square. First part is clear. G of f of x, g composed with f is nothing but g of f of x, which is g of x plus 1, which is x plus 1 the whole square. So is this clear? The first part. Similarly, we can solve the second part. F composed with g. F composed with g of x is f of g of x. Okay, that is f of g of x. So when you write f of g of x, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन का सॉल्व करना है, फिर बाहर वाला फंक्शन का सॉल्व करना है. तो हम लोग को g of x ये करना है, g of x को सब्स्टिट्यूट करना है. तो g of x क्या है? x square. So I get f of x square. ठीक है, I get f of x square. And the way in which my f of x is defined, that is x plus 1. F of x square, I get x square plus 1. So g composed with f क्या है? x plus 1 the whole square. F composed with g क्या है? x square plus 1. So this clearly proves the composition of function is not commutative. ठीक है, it proves that the composition of function is not commutative. Associative है, वो हम लोग बाद में कोई एग्जांपल करके देख चेक करेगा करके उसको. First example is clear? Sir? Yes. So can you explain it once more? Okay. Like the I g have plus function one f in g from the set of real numbers to itself. How is your f of x defined? F of x is given by x plus 1. How is your g of x defined? G of x is x square. ठीक है, अपने को भी दोनों कंपोजिशन फाइंड करना है. ओके, इफ यू फील कंफ्यूजिंग है तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि क्या फाइंड करना है. To find ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को फाइंड क्या करना है? f कंपोज विद g फाइंड करना है एंड g कंपोज विद f फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम लोग ने g कंपोज विद f के लिए सॉल्व किया है. तो g कंपोज विद f ऑपरेटेड ऑन x एज पर द डेफिनेशन जो भी हम लोग ने ऊपर देखा. व्हाट इज g कंपोज विद f? गिवन एज, इट इज गिवन एज g ऑफ f ऑफ x. ठीक है, इट इज गिवन एज g ऑफ f ऑफ x. तो उस हिसाब से मेरा g कंपोज विद f is g of f of x. But what is my f of x? My f of x is x plus 1. Right? My f of x is x plus 1. So what is g of x plus 1? G of x plus 1 is x plus 1 the whole square. Right? This much is clear? First part is clear. G composed with f.
Yes, is the first part clear? तो फिर मैं second पे जाऊँ वापस. Okay. So G composed, I'll just repeat and then I'll go to the second part. G composed with F is given by G of F of X. But what is your F of X? X plus 1. So I get G of X plus 1. So G of X plus 1 is X plus 1 the whole square, because this is how the function G is defined. Okay. Then F of G of X. F of G of X. So that is F composed with G. F composed with G is F of G of X. So what is my G of X? G of X is X square. So I basically get F of X square. Okay, I get F of X square. So F of X square is how your function F of X is defined? X plus 1. So I get X square plus 1 as the answer. So now is it clear, the first sum? Shall I go to the next one? Yes, sir. Okay. तो सेकेंड केस में सी फर्स्ट वाला जनरल था, अभी सेकेंड हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए फाइंड करेगा. F is a function from Z to R, which is given by F of X is e raised to X. G is a function from Z to Z. Okay, G is a function from Z to Z, which is given by G of X is X square plus 3. ठीक है, G of X is X square plus 3. तो यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है? F composed with G of 2 and F composed with G of -1. ठीक है, F composed with G of 2 and F composed with G of -1. ये दो चीज फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा G composed with F एग्जिस्ट नहीं होगा. ओके, यहाँ पे तुम्हारा G composed with F एग्जिस्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ G composed with F, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ G composed with F का कंडीशन क्या है? G composed with F कब एग्जिस्ट होगा? जब F का कोडोमेन इज सेम है G का डोमेन. ओके, F का कोडोमेन इज सेम एज G का डोमेन. बट वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि F का कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स. G का डोमेन क्या है? इंटीजर्स. तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे G कंपोज विद F एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे G कंपोज विद F एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है, फाइन. तो अभी अपने को जो फाइंड आउट करना है, F composed with G of 2. F composed with G of 2, as per the definition, it is nothing but F of G of 2. This part is okay. F composed with G of 2 is F of G of 2. Okay, this is F of G of 2. Now what is G of 2? What is G of 2? 7. 7. So it is basically F of 7.
g of 2 is 7, क्योंकि मैं g of x का डेफिनेशन में x को 2 डालूंगा तो I get 2 का स्क्वायर प्लस 3 which gives me the answer as 7. Now what will be f of 7? F of x is e raised to x. So what is f of 7? E raised E raised to 7. Correct? Okay. Next, f of f composed with g of minus 1. F composed with g of minus 1. So that is basically f of g of minus 1. Okay, f of g of minus 1. So can you tell me इसका आंसर क्या आएगा? F of g of minus 1. E raised to 4. E raised to 4. 4. Because g of minus 1. Okay, I'll write down. G of minus 1 is 4. So I get the answer as e raised to 4. Okay, I get the answer as e raised to 4. Fine? Is this clear? Yes, is the sum clear? Okay. Now the third sum. F is a function from R to Z. G is a function from Z to R. We are supposed to find out the domain and codomain of F composed with G and G composed with F. So tell me, क्या आएगा आंसर? पहला F composed with G का domain and codomain. F is a function from R to Z. G is a function from Z to R. F is a function from R to Z. G is a function from Z to R. So what is the domain and codomain for F composed with G as well as G composed with F? तुम लोग को चाहिए तो I can show that diagram. This is what is the diagram for G composed with F. F is a function from X to Y. G is a function from Y to Z. So G composed with F is a function from X to Z. G composed with F is a function from X to Z. तो ये डायग्राम को कंसीडर करके give the answer of the second sum. I am just scrolling down to that question. So domain and codomain for F composed with G. As well as for G composed with F. पहले G composed with F का बोलना है तो भी चलेगा क्योंकि डायग्राम G composed with F के लिए था. Yes, anyone?
domain and codomain for F composed with G as well as for G composed with F. Compare करो diagram के साथ. Yeah, I'll try to bring the diagram down. Let me try to where the copy. Okay. Fine. This is the diagram, but अभी दोनों एक screen पे नहीं आ रहे ना. Okay, now I think आ रहे दोनों. Yes. So now you can tell, but question नहीं आ रहा है अभी. हाँ, question भी आ गया. चलो. G is a function from Z to R. F is a function from R to Z. So G composed with F will be a function from which set to which set? Yes, someone was giving the answer, I suppose. Domain is R and the codomain is 2R for G of F. We are talking of F composed with G or G composed with F? G of F. G composed with F. G composed with F. What domain you said? R. Real number. Okay. And codomain? R itself. R itself. Okay. And now what about F composed with G? Z and Z. Sorry? Integers. Integers. And codomain? Not sure. Codomain also will be integers. That's what I. Not sure for this F composed of G part. Sorry? I'm not sure with the F of G part. Okay. So, fine. We get G composed with. Acha, you didn't got F composed with G ka part. That is what you are telling. Okay. So what I will do is I'll try to explain you with the diagram which I have. F composed with G चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं G लेगा, यहाँ पे मैं F लेगा, and this is what is my F composed with G. ये X की जगह पे मेरा G का डोमेन क्या था? G का डोमेन था Z, करेक्ट? और G का कोडोमेन क्या था? R. एंड F का कोडोमेन क्या था? Z. Okay, now see, G is a function from Z to R, F is a function from R to Z. So F composed with G will be a function from Z to Z. Okay.
Is it clear now? Yes, is this part clear? Yes, sir. Okay. So I will stop here and we will continue tomorrow. Okay. So if anyone has any doubts or if you want to take any of the screenshots, tell me. So I can just scroll to that page and you can take the screenshot. By tomorrow, I will be able to upload this PDF in this thing. What do you say? In your Teams. Okay. Yes, sir. Okay. So I will end the class. Yes, sir. And we will continue tomorrow.